I always say that the poetry is the best exercise for anyone or who is willing to become an actor to, if you're working on your speech and diction, poetry reading cannot be replaced by any other exercise. It's a must. सर बड़ा प्रिपेयर करके मैंने सोचा था कि ओपनिंग करूंगा कि हमें भी कुछ पानी की जिद थी और आप मिल गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद ये कॉफ़ी के लिए, आपने कॉफ़ी पिलाई। ज़्यादातर समय जो लोग इंटरव्यू लेते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। सर लेकिन आपने जो हमें रस के घूंट पिलाए हैं सालों साल, मतलब ऑनेस्टली सर आई हैव बीन अ लॉन्ग टर्म फैन। मतलब वो शूल और द्रोहकाल के टाइम से जो है देखता आया हूं, लेकिन जो आपकी वो 7 मिनट की रश्मि रथी की सर, वो अगर किसी को, मतलब दैट शुड एक्चुअली बी अ केस स्टडी ऑन हाउ टू ट्रीट लिटरेचर, एंड लिटरेचर बुक्स आर probably something that I don't know if मतलब आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए होंगे, I'm not sure whether I should say that it's not talked about enough, your interest in it. But the written word is important, isn't it, sir? The written words are important. That is why the sound. You know, written words, whether you call it written words or the spoken word, you know, the words are important. And that is why humankind has come up with those sounds to communicate with each other. Yes, the silences are very, very important. But if you don't have respect for the words which are invented by the humankind, by so many greats of ancient time, how are we going to do justice to any kind of art which depends solely on the words? You know, okay, well, so that is where the literature, you know, becomes, you know, it becomes so important. That is why it becomes so important for people to read and to write, because when you learn it, that is when you come to understand the importance of it. Yeah. So it all starts with, I always say that the poetry is the best exercise for anyone or who is willing to become an actor to, if you're working on your speech and diction, poetry reading cannot be replaced by any other exercise. It's a must. And I have always been, it's very surprising for me, since the time I started doing theatre, that none of the greats who have invented and modified exercises, you know, and they have written about the ways of conducting, you know, workshops on method acting. None of them have given emphasis on poetry reading. Absolutely. And my childhood, you know, it was a blessing for me, because the school that I was studying in, I was in the boarding. The school and the towns, it was buzzing with elocution contest activity, you know, and that used to be quite a big thing. It was like winning an Oscar if you win the first prize. So we had the culture of reading, you know, stories, or reading speeches, reciting speeches of Jayaprakash Narayan, reciting speeches of Mr. Jawaharlal Nehru, you know, जो उन्होंने फ्रीडम इस पे 15th अगस्त को, एब्सोल्युटली जी, वो था। फिर आपको अंबेडकर साहब का, या फिर पोएट्री रीडिंग रश्मि रथी और बच्चन, सबको हमने इतना पढ़ा। इसलिए पढ़ा बिकॉज एक तो हम लोग की एक मेरा फैसिनेशन था परफॉर्मेंस को लेके, स्टेज पे जाने को लेके, तो उसके कारण वहाँ पे शुरू हुआ। अब दिनकर का अगर मैं आपको बोलूँ कि जब गुस्सा होते हैं कृष्ण, जब कृष्ण गुस्सा होते हैं, तो उसके पहले जो पूरी लाइन लिखी है कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, गर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, गर मुझे बांध कब सकता है। तो आप ये देखिए कि हर जो उस मीटर है, उस मीटर के साथ में जो वर्ड्स हैं,
वो एक एक वर्ड्स जो हैं उसकी अपना सुर है, अपनी अपनी एक ताल है जिसके साथ उन्होंने लिखा है। इट्स अ ग्रेट वर्क। और खिलवाड़ जो किया है मतलब भाषा के साथ सर, पहले तो इंटीमेट नॉलेज एक तो भाषा की। सर एक और जो बात है अब कि एक होता है कहना और दूसरा होता है सुनना जी। एक बहुत ही अच्छा कोट किसी ने मुझे दिया था कि नाउअडेज वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर वेटिंग। आजकल हम इंतजार कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? एक मेरी बेटी के स्कूल ने उसको एक टॉपिक दिया था, जस्ट टू व्हाट दे डू दैट दे गिव अ टॉपिक just to see the imagination of the child. And that was, there were two exercises. It was so fascinating. And one was what will happen, how Harry Potter and Mr. Mahatma Gandhi will talk to each other. So that was amazing, okay? Then they have given a topic which is related to your question. Unmute. Please unmute. Oh, wow. So, that's it directly related to what you just asked me. Listen, unmute. हम लोग इतने खोए हुए हैं अपने हैं, आत्ममुग्ध इतने हैं, हम दूसरे को सुनते ही नहीं हैं। हम लोग इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं कि we think that we are the best gift to the human kind. हमने या फिर हमने एक दायरा बना लिया है, हम उसी में हैं, हम उससे आगे की ज़िंदगी को, लोगों को, रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा हूँ। जब मैं आपको सुन ही नहीं रहा हूँ तो एक्चुअली में दो आइलैंड पे खड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, ये ऐसा हो गया है। और भाषा ही तो जोड़ती है। और भाषा जोड़ती। बिल्कुल।